Welcome to Lab 1 channel. Today I am going to repair up 3D up 300 plus scanner. Scanner is not connecting with PC. Let's repair this scanner. I connect the power supply. The light is glowing. Power supply light is glowing. Both cam light is glowing, but fan is not spinning, and motherboard communication light is not glowing. The main motherboard light is glowing. And software says connection failed. As you know, when we attach the power cable, the scanner gets on, the projector light will glow and project the image in the cabin. If you ever open the scanner, then you have seen that the fan is spinning and many lights will glow on motherboard. But in my case, I connect the power cable, the light is glowing, both cam are working, but no projection image or projector light is glowing. Fan not spinning. And the communication light is not glowing. Now I am removing the faulty IC. And I install buck controller on this motherboard controller. Connect 12-volt power supply. You can see all light is glowing. Communication light working with BIOS. Let's measure the voltage. Input voltage 11.9, output
4.9, in regulator IC 4.29, coil number 1 1.19, coil number 2 3.2. Motherboard is okay now. Connect the power cable. You can see all light is working, communication light is glowing, DLP is working, projector light is glowing, and all communication light is working properly. Fan is spinning. You can see the projector DLP image. Now scanning is working properly. Now in Hindi. मेरे पास ये अब 3D का स्कैनर आया था रिपेयरिंग के लिए। इसमें प्रॉब्लम थी, ये पीसी से कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। जब मैंने इसको खोला तो चेक किया, इसकी जो कम्युनिकेशन वाली लाइट हैं ये नहीं चल रही थी। प्रोजेक्टर की लाइट जो होती है जब आप कनेक्ट करते हो स्कैनर को पावर के साथ, तो सबसे पहले प्रोजेक्टर की लाइट आपको नज़र आती है, वो भी नहीं चल रही थी। इसके जो दोनों कैमरे हैं इनकी लाइटें ऑन थी, और इसकी जो पावर सप्लाई है, मेन पावर सप्लाई, उसकी लाइट ऑन थी, मतलब कि वो काम कर रही थी। जो इसका मेन बोर्ड था उसकी लाइट ऑन थी, लेकिन उसका जो कम्युनिकेशन वाला आईसी होता है हब के अंदर लगा हुआ, वो चल रहा था। उसमें कैमरे वगैरह शो होते थे जब हम अपने किसी के साथ लगाते थे, लेकिन वो आगे मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट नहीं कर रहा था। जो इसका नीचे मदरबोर्ड लगा हुआ है उसके साथ वो कनेक्ट नहीं कर रहा था, एज अ हब यूज़ हो रहा था वो। और इसका ये फ़ैन भी स्पिन नहीं कर रहा था। फिर मैंने इसमें चेक किया, जो जो प्रॉब्लम थी वो मैंने सॉल्व की। और अगर आपके पास ऐसा कोई प्रोग्रामर है, कोई भी प्रोग्रामर है, कोई भी स्कैनर है आपके पास जो आपने रिपेयर करना है, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो।